Sir, I am Deepak Vaikan's father. So I'm president of Rotary Club Bareilly. You saw my Instagram or something? Yeah. Come. I told my father That I'm in Rotary. Yeah, he was very much interested. Very active in Rotary. Yeah, I'm a major donor. I'm a assistant governor and all these things. That's right. Good. So sir, you should be DG next year. No, I can't take the time now. I'm not able to even be an AG properly. I'm current AG here, but it's very hard to spend time. Yesterday we had our district conference, just got over. A lot of roles in that, and Rotary, if you take a responsibility, you should do it. Very difficult to give time now for me to become governor. Many people want me to, but I can't do now. At least not for the next 5 years. Maybe the president, I'm seeing that I'm so much involved. I've got 2-3 businesses with me. Okay. So I have to spare a lot of time. Yeah, I was a president of our club 12 years ago. I'm in Rotary for 20 years now already. Please, sir, मैं coach हूँ and Everybody I know here, I used to be so active in Rotary. Yeah. मैंने देखी आपकी प्रोफाइल से मैं आइडिया लग गया और very active in Rotary. पहले तो बहुत ही एक्टिव था, अभी इस साल फिलहाल again I'm active, but it requires lot of time. तो blocked nose, right side, deviated, बहुत ही deviated है. Okay. Yes. So most likely we may not need rib for you. Like 90% I may not need, but still you have to give me that consent for harvesting rib just in case. For some of the patients we cannot do without, but for your case most likely I can manage. But still I'm just telling you because you got to give me consent. That's the first thing, and we can get you proper results, no problem. So see, there are few issues I'll tell you. It's very big one. Yeah. Then you see this is called dorsal aesthetic line. So it's not straight. It's going towards the left side. Then here it's narrow. Here it's broad. Here the hump is big. Yeah. So we have to reduce the hump, increase the width here. If you see, it's very narrow like a woman. So we need to make the nose little wider here. Here the bend only should be removed. Then when you come to the tip, again the tip is bifid. So it's like there's a groove there and Double chin. many things are there in your nose. So everything can be put together. We'll have to do osteotomy, all of that. The only good thing is there is excess in your nose and there's not less. So the girl I saw before, her nose, there's like I need to take rib and I need to bring the nose more outside. Augmentative rhinoplasty. Yours is not that. Augmentative rhinoplasty is a little bit more difficult than this type of rhinoplasties because we don't need to, just have to readjust things and that can be done much more easily. Yeah, I want my length to also be decreased. It will be, yeah, it's too much of over projection and From this doesn't side, I suit think your, it's very much noticeable. yes, But from this side, asymmetry. That is because the nose is tilted towards the left. side. Yeah. But I'm not only going to make it straight, everything I'll correct the height will go down, tip will become pointy, this will get thicker, this will get thinner. Like the full thing we were going to do, not just one or two things. So दो तीन चीज़ें होती है जैसे जब ऐसे स्माइल करते तो ऐसे ना वो एक नीचे को ड्रॉप करती है जब Smile करो. हाँ, that also will change a little bit. Not totally, but it will change a little bit. Because the muscles on the base of the nose are connected to the lips. Paranasal muscles go and connect to the muscles of the lips. So ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मूव ही ना हो. That won't look nice. That will look like a mask. But थोड़ा कम मूवमेंट ऐसा हो जाएगा. तो जैसे एक मेरा ना एक्सरे दिखाऊं आपको. हमको स्कैन लेना पड़ेगा यहाँ पे. आपको लिया है आई थिंक ऑलरेडी. स्कैनिंग यहाँ पे नहीं हुआ है. तो ये आपको स्कैनिंग यहाँ पे लेना पड़ेगा. इसमें मुझे थोड़ा डिटेल्स मालूम पड़ेगा. फिलहाल ये है तो मैं देख लूँगा बट लेकिन वहाँ वो कोरोना काल हो नहीं पाई. इस बीच में इसने आपके बारे में सर्च किया. हाँ तो फिर ये एक्टिंग आपने सर से करा वो होगा. एक्चुअली थोड़ा पहले ही था लेकिन काफ़ी फार अवे है हमारे यहाँ
बहुत दूर है यार। मतलब जिस दिन इसकी सर्जरी प्लान थी उसी दिन से दिल्ली में कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिशन इट वाज शेड्यूल्ड फॉर ईयर ओनली ना दैट्स तो उस समय ये कराया था क्या? हाँ, तो शायद अंदर भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इनकी सेप्टम में भी प्रॉब्लम है, बाहर से दिख नहीं रहा, स्कैन में दिख रहा है मुझे, और डिटेल दिखेगा जब आप यहाँ पे स्कैन लेंगे। और आपको सर्जरीज कब करानी है? आपको सर्जरी के लिए नहीं सर, आज तो नहीं हो पाएगा फिलहाल। सो मेरा परसों का फ्लाइट हो गया मेरा। आप चले जाइए, इनको छोड़ के हम देख लेंगे इनको। मेरी जान अटकी हुई है इसमें। नहीं वो तो समझ रहे हैं तो, लेकिन हम कुछ नहीं होगा आपका इसको। आज कल करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, कल हो जाएगा, कल करेंगे अच्छी तरह से। आज आप खाना खाए क्या? से बात हुई थी तो मैं आज एक बेबी भी आए हुए हैं बीच में, कल करते हैं आपको जल्दी से, कल फर्स्ट करेंगे इनका। हाँ मालूम है, तो कल करते हैं इनको फर्स्ट। इनका पूरा रिजो से बात कराओ, CBC, HIV, HPC सब कुछ सर ये टेस्ट हो गया, आपसे मेरी बात हुई थी वीडियो कॉल पे, आपने कहा था अपने हाथ से करवा लो। आपने करा लिया तो दे दो इनको, मेरी लैब नो प्रॉब्लम, आप इनको दे दीजिए बस, हमें तो बस रिपोर्ट चाहिए। जस्ट गिव इट हियर। अच्छा ये सब क्यों कराया आपने? ये तो चाहिए था हमें, नहीं चाहिए था ये सब। पहले सर हुआ था ना, मैं था तो आपने कहा कि वही रिपीट कर, तो मैंने सभी करवा दिया इसलिए। एक्चुअली मैं जो आपने बताया था जो पहले कराया था दिल्ली के डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वही आपने रिपीट कराया था। सर्जरी आपसे होनी थी इसलिए वहाँ कोरोना का फेज आ गया दिल्ली में, जबकि शॉर्ट पीरियड में खत्म भी हो गया वो विद इन अ मंथ्स टाइम। फिर एक डाउट भी आ गया कि अच्छा वो हो गया शिफ्ट। सब कुछ नॉर्मल है, इसको इसे चाट लो इसे। सर इसकी 20 की फ्लाइट है प्रशांत की। आज डेट क्या है? आज 11 11 कल होगा 12, थोड़ा टाइट रहेगा, थोड़ा पोस्टपोन कर लीजिए इनका फ्लाइट, मैं आपको कल बताता हूँ। तो कैंसिलेशन दोबारा बुक करानी पड़ेगी।